Assalamualaikum everyone, welcome all of you in the class. Today we'll read about a story called Sniper, which is written by Liam O'Flaherty from the English Literature section of class 12. So the Sniper is actually a story with a deeper meaning, क्योंकि ये पोर्ट्रे करता है अबाउट ह्यूमन नेचर को, उसके वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, एंड हाउ कन्वीनियंटली सच वैल्यूज़, बिलीव्स एंड इवन आइडियल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं टू जस्टिफाई वायलेंस और वॉर. सो इट रेजेस सम वैलिड कंसर्न्स लाइक पॉलिटिकल, रिलीजियस और इवन सोशल कंसर्न्स को पोर्ट्रे करती है. इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस भी बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी आर नेम्ड सेम. स्नाइपर जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी है और स्नाइपर टाइटल का भी नाम है. एंड ऑथर ने जो है ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया है. ही डज नॉट कॉल हिज मेन कैरेक्टर विद एनी स्पेसिफिक नेम, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू जनरलाइज हिज सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी जो कि है स्नाइपर, एंड उसको ये रिलेट करना चाहता है टू स्नाइपर हु कुड बी एनी सोल्जर जो कि फाइट कर रहा है कोई भी वॉर, चाहे सिविल हो, मिलिट्री वॉर हो, कोई भी. सो दिस टाइटल पर्सोनिफाइज वायलेंस caused by human indignation, and the title is actually the reflection of all those soldiers जो कि trained है to kill and taught to show no mercy whatsoever to their enemies. So this story Sniper जो है it abounds with all sorts of divisions. इसमें कोई भी divisions ये नहीं है कि both figurative या literal divisions it abounds it. So this story takes place just before dawn and the moment of division between day and night. उस टाइम पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है. up until the end all the action takes place on the rooftops of Dublin. तो ये सारा जो एक्शन है ये रूफ टॉप्स पर ही होता है, जहाँ पे कि जो रिपब्लिकन स्नाइपर है और जो एनिमी स्नाइपर है फेस ईच अदर ऑन रूफ्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम वन अनदर. बीच में एक स्ट्रीट है, एक रूफ टॉप पर एक स्नाइपर है, एनिमी स्नाइपर, और दूसरे पे रिपब्लिकन स्नाइपर है. और ये इनका जो ये है एक्शन है वो स्टार्ट होता है वहाँ से. एंड स्टोरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली वीक्स ऑफ द आयरिश सिविल वॉर जो कि होता है 1922 to 23 में. एंड इट itself इज़ अ ग्रेट डिवाइसिव इवेंट जो है, जिससे कि दो फैक्शंस जो हैं आयरिश रिपब्लिकन्स के who had been allies actually during the Irish War of Independence. तो आधों ने डिसअग्री किया और went to war with each other over whether to accept the terms of the treaty with England, and that had ended the Irish War of Independence. अब जिन्होंने नहीं किया तो वो अगेंस्ट हो गए. सो रिपब्लिकन्स भी हैं और इसमें एनिमीज भी हैं. तो ये जो रिपब्लिकन स्नाइपर होता है इसी से एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ही सिट्स ऑन अ रूफ एंड ही ट्राइज टू लाइट्स अ सिगरेट डिस्पाइट नोइंग कि जो अगर इसका जो ये सिगरेट है इसकी जो फ्लैश ऑफ लाइट है ये एनिमी तक ना पहुंचे या उनको ये पता ना चले एनिमी स्नाइपर्स को कि ये यहाँ पर हैं ऐसे, तो ही वुड बी इजीली टारगेटेड. तो एनिमी इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट ऑन द अदर ऑपोजिट साइड ऑफ द रूफ ऑफ द रिपब्लिकन स्नाइपर के ऑपोजिट साइड पे है. So at the same time, an armored car comes down the street and an old woman comes around the corner and informs the man about the armored car, about the Republican sniper, sorry. तो वो जो ओल्ड लेडी है वो एक तरीके से खबर पहुंचाती है इन जो कार में बैठे हुए लोग होते हैं उनको, कि वो भी ऑफिसर्स होंगे तो उन तक खबर पहुंचाती है अबाउट द रिपब्लिकन स्नाइपर. अब रिपब्लिकन स्नाइपर जो है ये थोड़ा सा कॉशियस हो गया और अपनी जगह से उठा और ही ट्राइज टू शूट द वुमेन एज वेल एज द जो उस कार में था. ही ट्राइज टू शूट देम and he was almost successful in shooting them and saving himself. So distracted for a moment, this Republican sniper gets him hit in the arm by the bullet of the enemy sniper. अब जो ये सारा यहाँ पे सीन है ये he was observed, the enemy sniper जो on the other side of the opposite side of the roof था, he observed that. तो उसने इसको शूट किया रिपब्लिकन स्नाइपर को and he was hit in the arm by the bullet of the enemy sniper. So in tremendous pain, he cannot hold his rifle anymore. He pours an antiseptic over his wound, which is also extremely painful.
So in order to escape, he puts his rifle on the edge of the roof with his cap on its end, and the enemy sniper shoots at it. And the Republican sniper जो है ingeniously makes it look that कि वो मर चुका है. वो ऐसा इम्प्रेशन उसने क्रिएट किया कि जो एनिमी स्नाइपर है ऑन द अदर साइड ऑफ द रूफ, तो उसको लगा बिल्कुल ही कि ये ही इज़ डेड. The enemy sniper now thinks that he is safe, stands up on his roof, and with a surge of pride and joy of the sniper shoots him dead, which is with his revolver. तो इतने में क्या हुआ, जब उसको इस गुमान में था वो कि मैंने जी रिपब्लिकन स्नाइपर को मार ही दिया, तो इतने में ही उसको गोली लग गई with the gun of the revolver, या रिवॉल्वर के इससे गोली से. However, now that the adrenaline of battle is over, अब जब रिपब्लिकन स्नाइपर ने बिल्कुल ही उसको अपने रिवॉल्वर से उसको मार ही दिया, तो द होल एड्रेनलिन ऑफ बैटल इज ओवर नाउ. अब उसमें कोई वो जंग का जोश नहीं था. दैट वाज ओवर एंड द रिपब्लिकन स्नाइपर फील सेफ. द लस्ट ऑफ बैटल डाइड इन हिम एंड ही बिकेम बिटन बाय रिमोर्स. अब अल्टीमेटली होता क्या है, मतलब आपको जब ये एहसास होता है कि नाउ द गेम इज़ ओवर, नाउ यू रियलाइज दैट यू आर अ ह्यूमन एंड यू आर बीइंग बिटन बाय द रिमॉर्स जो कि आपने किया. ही थ्रोज हिज रिवॉल्वर विद एन ओथ, finishes all the whiskey in his flask and begins to go down to street level to report to his commander. अब इतने में क्या हुआ, he reached onto the street and he feels a sudden curiosity to identify of the enemy, to find out the identity of the enemy sniper. वो देखना चाहता था कि उसने किसको मारा, whom he had killed. Dodging gunfight behind him, अब यहाँ पे फिर से गोलियाँ चलने लगी. He tried to reach somewhere and throw himself at the corpse, and what he saw was the dead body, and he looked into his brother's face. That dead body was the body of his brother. Here when the sniper is not done fighting, तो जब उसको realize होता है that he found the body of his brother, तो here Flaherty जो इसका author है, he tries to mean this both figuratively as well as literally. क्या कि full cost of war, जो कि पूरा वॉर हुआ है, ये रप्चर हुआ है बोथ फैमिलीज़ का. चाहे वो आयरलैंड हो, नेशन ऑफ आयरलैंड हो, या इन दिस आयरिश सिविल वॉर, इट बिकम्स क्लियर दैट रीडर इज फोर्स्ड टू सी दैट बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ हु विन्स दिस वॉर, ये किसने जीता, ये जंग जीती किसने. द वॉर इज़ रियल टेस्ट. चाहे वो स्नाइपर हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इज़ एबल टू परसर्व पास the profound breakage of family and nation created by this war. तो यहाँ पे जो है स्नाइपर कोट करता है, as you can see on the screen, here and there through the sea, machine guns and rifles broke the silence of the night. Spasmodically, like dogs barking on lone farms, Republicans and Free Staters were waging civil war. So it actually alerts the reader about the dichotomies that are present in this tea: roof versus tea, free stater versus republican, students versus fanatic. So these exist side by side, but also in tense opposition to one another. जो कि war has distorted the landscape, turned a tea into a battlefield, and made life used to death. So here the analysis of the poem is that in war, even the slightest choices, like choosing to light a cigarette, take on big significance, as they can lead to death, जैसा कि इसके साथ हुआ. But he tried to manage himself from dealing with the death. So the sniper here takes the risk and is lucky not to get killed. Perhaps ये जो स्नाइपर है, इसका बैकग्राउंड ही ये है कि जो स्टोरी सेट हुई है डुबलिन में, आयरलैंड में, इन 1920, एट दैट टाइम इट वाज अ बिटर सिविल वॉर. On one side were the Irish Republicans. They wanted all of the Ireland to become a republic, totally free from British rule, because Ireland at that time was under the Britishers. So on the other side, आधे लोग ऐसे भी थे जो they were free staters. उनके लिए कोई ये मैटर नहीं करता कि are they ruled by British or they want their own state.
to get free from these British. So they had compromised with the Britain and had agreed to allow the English to continue to rule 6 counties in the northern province of Ireland. So उनके लिए मैटर नहीं करता. So this whole जो ये play है, it was between free staters and republicans, Irish republicans actually. तो इसमें ये जो राइटर है Liam O'Flaherty, he himself was a member of IRA, yani he was a member of Irish Republicans. So he centers his short story on a scene of fighting in Dublin, in which he was himself a witness of this whole scene which took place between the two rooftops, जो कि between IRA sniper और enemy free staters के बीच में ये scene create हुआ है, and he was an eyewitness of that scene. So that is why he he centers his short story on that fighting. Actually, here in this story, the sniper proves himself to be an ingenious soldier actually, क्योंकि he masters his physical pain and outsmart his enemy as well, and he was outshined and came victorious. But why the enemy soldier stands up is a question to consider. Sure, he thinks that he has killed his enemy, but standing in such a way still seems like a risky act. So, in some ways, the Republican sniper's early decision to light a cigarette was not good. So, it was all. So, at the end, मैं आपसे ये सब यही कहना चाहूँगी, जो स्नाइपर है, it symbolizes जो कि लियम ओ फ्लेहर्टी ने लिखी है. So sniper इसमें एक protagonist भी है, and is used as a symbol for several things. He symbolizes actually the terrible price of a civil war in Ireland, जो कि उनको आयरलैंड में देखनी पड़ी, where families जो हैं they were divided with members on both the sides of fighting. So the theme is that war reduces human beings to mere objects. इसमें कोई शक ही नहीं है कि they become targets and nothing more, to be shot at from distance. And जो Liam O'Flaherty है, ये खुद भी refrain करता है to any of his characters. Hope you like this story. Wish you all the best. See you in the next class. Till then, Allah Hafiz.